So, welcome all of you for this session again. I hope we are all excited. So, today is about leadership. Okay, so developing your leadership is the topic today, or you can say developing the leader within you. This is based on a book, Developing the Leader Within You by John C. Maxwell. You can identify him as a leadership guru, or maybe most famous, or most powerful, or most influencing leadership guru over the world. He has written a number of leadership books, and he has been quite famous teaching leadership. His organization, Enjoy, and others also has been teaching and promoting leadership across the world. So this is one of the book from the leadership coach himself, and we get into the topic. So we all have some amount of leader within ourselves already. हम में लीडरशिप का पोटेंशियल है, बहुतों में लीडरशिप का पोटेंशियल होता है, बट हाउ शुड वी डेवलप दैट, है ना? तो डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. जो लोग डेवलप नहीं कर पाते उनका लीडरशिप पोटेंशियल रिमेन्स अ पोटेंशियल, so it doesn't bloom like a flower. And leaders are what we need in this world, not only in entrepreneurships, not only in organizations, but leadership are required across all verticals of life, be it spirituality, be it society, be it governance or government related changes, be it war, be it social initiatives, be it peace initiatives, be it world level initiatives. Everywhere leaders are required, and under the leadership of great leaders only we have achieved so far. So if you just turn the books in the history and look at the past, there have been numerous leaders we keep hearing about. We hear about Steve Jobs, one of the business leader. We hear about Nelson Mandela, who took the black, who freed black people by his time in the prison, by his powerful speeches, by his work. We hear about Martin Luther King Jr. We hear about Buddha, who has been a spiritual leader for centuries and also for going to come. So in all dimensions of life, in financial world, you hear of basically Warren Buffett, also Bill Gates. You keep hearing so many leaders. So we are all attracted to leaders because they have certain charisma of their own. लीडर्स के पीछे हम जाना चाहते हैं. लीडर्स के पीछे हम सहजता से चलने लगते हैं खुद ही. कभी कुछ देखो, कोई कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इवेंट चल रहा है ना, तो लीडर्स जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं. सो पीपल विल इजीली वॉक बिहाइंड द लीडर्स. Most of us are followers, have a followership mindset. Very few of us have this inbuilt or proven or trained quality, which is called as leadership. We will see some of these things. So these first 5 things are listed here. I'll just read them out to you. We will talk about leadership definition. तो लीडरशिप मतलब क्या है? देखो, लीडरशिप के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है. एवरी लॉट ऑफ कोट्स, थाउजेंड्स ऑफ कोट्स, हंड्रेड्स ऑफ कोट्स यू विल फाइंड अबाउट लीडरशिप. बट क्लैरिटी नहीं होता है लोगों को. फिर भी किसी को लगता है क्या सिर्फ कोई इनिशिएटिव लेता है वो लीडर है क्या? देयर आर पीपल हैव कंफ्यूज्ड लीडरशिप विद मैनेजमेंट. People have confused leadership with effectiveness or productivity also. So let's see what is the definition of leadership today. Then we will see what is the key to leadership. What is the master key to access the leadership potential within you. Then we will see the most important ingredient of leadership, ultimate test of leadership, how it passes the fire test, and the quickest way to gain leadership. So these are the 5 steps. Now, in these things, so completing these 10 steps, we will be completing the full recipe, or you can say a secret recipe of leadership. So, as some of you know, there are beautiful quotes in our sessions. In this beautiful presentation, also, it is sprinkled with some good quotes. So, this is from John C. Maxwell himself. The effectiveness of your work will never rise above your ability to lead and influence others. So leadership is like a multiplier. So the effectiveness of your work, मतलब किसी भी चीज में अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, if you want to become successful, effective, happy, proving in any career, then the ability to leadership is a must, and your ability to lead and influence others drives your effectiveness by a multiplier. So if someone is, let's say, a leader on 1 on 10, if let's say leadership capability is only 3 on 10 and effectiveness is 9 on 10, the person is very effective, very productive, very good, go charming, good, go lucky with others, and always successful, always doing his things. But his leadership ability is 3 on 10, he will not grow beyond a certain amount in his career. But let's say if his leadership is grown from 3 to 6, just 3 to 6 or 3 to 5, then his effectiveness, although let's say remains constant at 8, he has a lot of potential for him now. His leadership or his success quotient will instantly multiply. That's the power of leadership, the ability of leading others. So let's get into the definition of leadership. Leadership मतलब क्या है? देखो, हजारों definitions आपको मिल जाएंगी. आप leadership पे Google करोगे, आपको भरमार definitions की मिल जाएगी. But it will more or likely confuse you because like success is another word. Leadership is one of them. These words have become so synonymous to us. हम इतने बार उनको सुनते हैं, success और leadership और happiness. इनकी definitions बहुत confuse हो गई हैं, right? They have become a lot abstract and they have merged with a lot of other things. तो कोई किसी को happiness बोलता है, कोई किसी को success बोलता है, कोई किसी को leadership बोलता है. Let's see what is leadership. In one word, if I were to say in this session, the definition of leadership is influence. Influence हमें सबको पता है.
तो इन्फ्लुएंसर हम सुनते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन मार्केटिंग टर्म नाउ, पीपल बिकम इन्फ्लुएंसर्स, दे बिकम फेमस. Don't compare it this influence with just the influencers. Influencers are just a part of it, but the definition of leadership is influence, nothing more, nothing less. Why? Because the ability to have followers, the ability for people to follow you blindly or seemingly or consciously, determines your ability to lead. If you are a leader, people will stand behind you. If you take a north direction, people will be ready to leave their directions and walk to the north with you. So leadership is influence. Let's expand on this definition a little bit. Leadership is the ability to obtain followers. तो देखो, फॉलोअर्स भी कोई बोलेगा अरे ये तो कैसे भी मिल जाएंगे. कैसे भी नहीं मिल जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं. आपने अगर कुछ छोटा सा काम कर दिया, आप समाज में कोई लीडर बन गए, पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल स्टार्ट टू line people start to line up behind you. But then if you are not a genuine leader, they will disperse away very soon. तो कुछ एक चीज में आप आगे आ गए और कुछ फॉलोअर्स मिल गए, तो वो फॉलोअर्स मेंटेन कैसे होंगे आगे. सो लीडरशिप इज एबिलिटी टू नॉट ओनली गेन फॉलोअर्स बट मेंटेन फॉलोअर्स. ओके, सो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन टू रिमेंबर, सबको समझ में आ जाएगा. You should remember, compare your, if you are able to influence others in one way or the other, then you are either a leader or you are on the verge of becoming one. So leadership is influence. Then other part to understand in this is everyone influences someone. तो देखो, हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर हाउस, लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू डू. सो ये सब चीजें ना, नोइंगली और अननोइंगली हमको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते रहते हैं. People who have kids, they know it already. Kids will follow you, kids will look at you, they will definitely be day and night, kids are being influenced by our actions. Those who are parents here, those who are not parents, उन लोगों को भी पता है कि मार्केट में, या आप फोन पे जोर से बात करते हुए चल रहे हैं, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं. आप ट्रैफिक में गाड़ी तेज चला रहे हैं, पीपल विल टेक सम जजमेंट्स फॉर यू. सो वेदर यू नो इट और नॉट, यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स ऑल द टाइम, मोर लाइकली, बिकॉज यू आर डूइंग सम और द अदर एक्शन, यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो जब इन्फ्लुएंस हो ही रहा है, सो व्हाई नॉट मेक इट अ गुड इन्फ्लुएंस, राइट? इसी को तो बिहेवियर हम बोलते हैं ना. हम देखो, हम चीजें करते हैं, आपके ना चाहते हुए भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो वो इन्फ्लुएंस अच्छा है या बुरा है, दैट विल डिटरमिन पीपल्स परसेप्शन फॉर यू. एंड इफ दैट इन्फ्लुएंस इज इन द गुड डायरेक्शन, पीपल विल स्लोली स्टार्ट कंसिडरिंग यू टू बी अ लीडर. वी नेवर नो हु और हाउ मच वी इन्फ्लुएंस. तो ये ऑब्वियसली ये डिटरमिन करना डिफिकल्ट है, जैसे हमने बताया, फॉर किड्स और विद योर कलीग्स और इन ट्रैफिक और इन मार्केट और इन मॉल्स और इन मूवी थिएटर्स, यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. But you don't know the level of influence you are creating for others, whether it could be good or bad. But influence is there. So if you are influencing others, why not influence it in a good way? There is another beautiful quote here for you. Hope you all can see this nice screen. People don't want to be managed, they want to be led. तो देखो, हम जाके, कोई मैनेजर होता है, तो हम लोग जल्दी फॉलो नहीं करना चाहते ना उसको, क्योंकि मैनेजर को देख के हम सबको एक नोशन होता है, मैनेजर को देख के हमें लगता है ये काम नहीं करते. मैनेजर लोग काम नहीं करते, मैनेजर लोग मैनेज करते हैं सिर्फ, ऐसा एक नोशन है, काफी लोगों को ये लगता है. ठीक है, ऑल्दो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर कंप्लीटली डिफरेंट. आप किसी को मैनेज करना चाहोगे ना, वो मैनेज नहीं होना चाहेगा आपसे, क्योंकि लोगों को लगता है ये कंट्रोलिंग है, दिस इज बॉसिंग अराउंड, दिस इज बॉसिंग एक्टिविटी, ही इज डोमिनेटिंग मी, शी इज डोमिनेटिंग मी. तो बॉस को, मैनेजर्स को लोग उतने हैप्पीनेस के साथ नहीं देखते हैं, लेकिन लीडर्स को लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं, लीडर्स के पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि लीडर इनिशिएटिव लेता है ना. लीडर, ही टेक्स द थिंग ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट. वो रास्ता बनाता है ना, इनिशिएटिव लेता है, कुछ आगे बढ़ता है, फिर लोग उसके पीछे चलते हैं. मैनेजर क्या करता है? सिर्फ मैनेज करता है. तो हम सबको भी ना, वी डोंट वांट टू बी मैनेज्ड, वी वांट टू बी वी ऑल वांट टू बी मेंटेनिंग आवर इंडिविजुअल स्ट्रीक्स और स्टाइल्स ऑफ वर्क. बट व्हेन वी सी अ लीडर, वी आर नेचुरली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड. हमें लगता है अरे ये बंदा में है कुछ बात है, ये बंदी में कुछ बात है, सो लेट्स फॉलो हिम और हर. दैट्स द पावर ऑफ लीडरशिप. नाउ as we go further, we are on this definition part yet. So there are 5 levels of leadership. Very very important slide. Okay, is this slide itself is the summary of all the levels of 5 levels of leadership. तो देखो, 5 P's होते हैं यहाँ पे, ये ढंग से समझ जाओ. ये एक बार दिमाग में बैठ गया ना आपके, तो आपको लीडरशिप का पूरा, यू विल गेट लीडरशिप 101. ओके, सो पिरामिड को देखो, यहाँ पे एक बेस होता है. बेस इज पोजीशन. बेस पे कौन से लीडर्स होते हैं? पोजिशनल लीडर्स होते हैं, जिनको बाय पोजीशन बना दिया गया है. तो कोई प्रमोट होता है, किसी को बोला जाता है कल से तुम्हें लीड करना है, तुमको टीम लीड बनाया जा रहा है, तुमको टेक लीड बनाया जा रहा है, तुमको स्क्वाड लीड बनाया जा रहा है, तुमको डेवऑप्स लीड बनाया जा रहा है. सो वी कीप हियरिंग प्रमोशंस होते हैं, तो पोजिशनल लीडर्स बनते हैं. सबसे बेस पे आता है ये. कई लोगों को ना सिर्फ इतना ही पता है. अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड ओनली इक्वेट दिस लेवल विद द होल लीडरशिप. तो लीडरशिप सिर्फ इतना नहीं है, लीडरशिप इज वेरी वेरी बिग. द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड इवन ग्रोथ एज अ लीडर comprises of these 5 beautiful levels growing as a pyramid. तो पिरामिड क्यों है वो भी समझ में आएगा.
कौन से लेवल पे क्या है वो भी समझ में आएगा। देखो पी से याद रखो, पोजीशन इज द फर्स्ट लेवल, लेवल 2 इज परमिशन एज यू कैन सी, लेवल 3 is production, level 4 is people or let's say people development, fifth is pinnacle. So 1 2 3 4 5. Pinnacle is very rare area where very few leaders are able to reach this level in during the course of their lives. It's very difficult to achieve. It requires Herculean effort. Position से शुरू होता है and it grows to permission. Now in terms of the R here, okay, so R, ये जो R में दूसरे words दिए हैं, they will help you understand the meanings of that level. So at position you have certain rights, you want to execute that rights. तो देखो कोई पहले कोई और टेक लीड था, वो छोड़ के चला गया और फिर दूसरा कोई टेक लीड आ गया, तो उसको राइट्स दे दिए किसी ने, somebody saw an influence, somebody saw a potential and then he was promoted as a leader, ठीक है, he or she. Now that person now has the rights. So at position that is the base level of leadership. यहाँ पे कोई सिर्फ बनता है, ठीक है, उसके बाद उसको ग्रो करना होता है. सो सम ऑफ अस थिंक दैट दिस इज द होल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप, कि ये टीम लीड है, ये मेरा टेक लीड है, ये मेरा लीड है, तो इसकी बात मुझे सुननी है बिकॉज ऑफ द राइट. सो दैट पर्सन वुड वांट टू एग्जीक्यूट देयर राइट्स. बट द नेक्स्ट लेवल इज परमिशन. परमिशन इज वेयर पीपल डेलिबरेटली गिव यू परमिशन बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स दैट यू बिल्ड. तो पोजीशन पे कोई लीडर आया, उसकी कोई सुनता नहीं है, फिर वो राइट्स एक्सरसाइज करके वो लीडरशिप वहां पे जमाना चाहता है, बट इवेंचुअली देन ही विल ग्रो इफ ही अंडरस्टैंड्स दिस नॉलेज ऑफ लीडरशिप. ही वुड वांट टू ग्रो different relationships with people. So relationships are very important. As a leader, even though he may have a position by because someone appointed him or her, but then she or he will deliberately make relationships better with people, so that then people don't look at his position, they will want to help him or her because of the relationships. That is level 2. लेवल 3 पे फिर वो और उसकी जर्नी आगे बढ़ती है एक लीडर की, तो फिर वो प्रोडक्शन लेवल पे आता है. प्रोडक्शन मींस यू आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर. प्रोडक्शन मींस यू आर डूइंग समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन मींस यू आर क्रिएटिंग, यू आर delivering things of value on a daily basis. देखो, leader is not only a leader by position as we are learning here. Leader becomes a leader by permission. People deliberately give permission to access their lives, to help them, to be able to be helped. Then on third level or production level, leader is able to produce things which are going to add value for years to come for the company or for the department he's working in or for the initiative that he's working. That means results. So it translates to the R word, which is results. That at level 4, this is perhaps the level where most leaders are able to reach, which is production level. ठीक है, तो ये हर लेवल पे ना स्टैग्नेट हो जाते हैं. कुछ लोग पोजीशन से ही आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ लोग परमिशंस तक आ जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, पोजीशनल लीडर होते हैं, अच्छे से उनका काम चल जाता है, बट वो प्रोड्यूस नहीं करते, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू ऐड नहीं करते. तो जितना आप इसमें ऊपर चढ़ोगे ना, द योर सक्सेस चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड मोर रेस्पेक्ट फॉर यू इज इन्फिनिट, टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो प्रोडक्शन पे कुछ लोग फिर स्टैग्नेट हो जाते हैं. दे आर एबल टू प्रोड्यूस, दे आर हैप्पी, दे हैव गुड रिलेशनशिप्स. बट एट लेवल 4 देयर इज अगेन पीपल डेवलपमेंट. तो यहाँ पर पहुंच के भी कुछ लोग रुकते नहीं है. ऑन प्रोडक्शन लेवल दे विल प्रोड्यूस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट एट लेवल 4 दे विल प्रोड्यूस फॉर पीपल, दे विल डेवलप पीपल, दे विल मेंटर पीपल. डेलिबरेटली दे विल पिक सम ऑफ द अपकमिंग लीडर्स और उनको उठा के वो लोग मेंटर करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं. तो जब वो पर्सनल लेवल पे हर एक को देखो, रिलेशनशिप तो बिल्ड हो गए, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करके आपने अपना काम निकाल लिया या आपके काम के लिए आपने बात कर लिया, दैट इज वन थिंग. ठीक है, दैट इज वन थिंग. But dedicating a portion of your time on a daily basis for months and years and grooming someone for life, for skills further to improve his or her life is completely different thing. That is people development. So people development में जो लोग पहुंचते हैं, that is level 4. Very few people reach this level. This is reproduction because you are not only producing for the company, you are producing people who become leaders further. तो आप level 3 leaders create करते हैं. Level 4 पे you are training people to become level 3 leaders themselves. And level 5, as you can only imagine, that it is the highest level of leadership. It is the most respectful level of leadership where people at level 5 they create level 4 leaders. People at level 5 are able to groom people. Obviously, they have passed through all the other levels and they turn people into level 4 and level 5 leaders. तो देखो ये बंदे की क्या वैल्यू होगी एक ऑर्गेनाइजेशन. अब आप वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं. थिंक ऑफ अ कंपनी लाइक एनी कंपनी, लेट्स से गूगल और एनी गुड कंपनी यू कैन इमेजिन और एनी एब्स्ट्रैक्ट कंपनी, और इस तरह के हर लेवल पे वहां पे लीडर्स हैं. तो यू कैन ओनली इमेजिन नाउ व्हाट देयर वैल्यू विल बी फॉर द कंपनी. एक पोजीशनल लीडर है जिसके मैं अलग अलग एग्जांपल से अलग अलग वर्टिकल से आपको बता रहा हूं बिकॉज दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट pyramid टू गेट clear of, and the rest of the leadership sessions also you will understand it in much more detail. But in a company there will be all these kinds of leaders. There will be positional leaders who are only their position, who are only there because someone promoted them, but उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहे. तो उसका क्या वैल्यू होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा सोचो. फिर एक परमिशनल लीडर है जो पोजीशन पे भी है एंड देन ही हैज grown and built his own relationships with people. People have started respecting him and assisting him in their tasks or his tasks, or he is able to assist others in their tasks. तो ये टास्क लेवल तक है. प्रोडक्शन लेवल पे आपने कुछ आउटस्टैंडिंगली अचीव किया, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन इम्पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ओके, कॉम्प्लेक्स डिलीवरीज, यू मेड समथिंग हैपन
for the organization. You executed a big project and you made it successful. That is production. Then people across the organization आपको जानने लगते हैं. Your name and fame as a leader grows inside the organization. That is production level leader. तो इसकी रेस्पेक्ट क्या होगी सोचो कंपनी में. फिर एक पीपल लीडर है जो ये सारे लेवल्स पे तो है ही, एंड देन ही इज आल्सो ट्रेनिंग पीपल टू बिकम लीडर्स. उसकी रेस्पेक्ट क्या होगी. और पिनेकल पे जो होगा, हु इज क्रिएटिंग न्यू लेवल 4, level 3 leaders, level 5 leaders for the organization who will help sustain, who will grow the organization for years to come, even though this pinnacle leader may have left the organization. तो pinnacle leader जो है, he will create level 4, level 5 leaders who will continue to boost or improve or grow the organization even though he may have left from the company. So such is the respect, such is the power, such is the influence of the pinnacle level leaders. तो ये समझना बहुत जरूरी है. तो ये 5 लेवल्स होते हैं. इस तरह से हमें ग्रो करना होता है लीडरशिप में. यू स्टार्ट एट अ पोजीशन, कोई आपको आके कोई लीडरशिप देगा, देन यू डेवलप योर ओन रिलेशनशिप्स, यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थिंग्स, you create Herculean results, you add value to the company or to your initiative, then you start training people. When you have tasted the flavor of leadership, you have started the waters journey, you start training others and you groom others. And then at level 5, obviously all of us aspiring leaders should aim to reach this level 5 also.